Hello everyone, welcome back to our lecture. So yesterday we have started with directive principle of state policy. Directive principles of state policy come in part 4 of our Indian Constitution and it cover article 36 to 51. So we have covered socialistic, Gandhian and liberal intellectual principles in all the articles and on the basis how we classify this. If there is any article that contain a principle about socialistic values, then we classify them under socialistic. If there is any article that is inspired from Gandhian ideology, we classify them under Gandhian. And if there is any article that is inspired from liberal and intellectual principles, we classify them under this. So we have also read the articles and I've told you how we implement the Dpsp. So there are certain reforms, certain acts that are passed by the government, and through that we implement the Dpsp. In today's lecture, we will talk about the important amendments that took place in our directive principles of state policy and which included further articles. So 42nd Constitution Amendment Act 1972. So as we know, it is one of the most important amendment that took place because it incorporated a lot of important principles in our constitution. 42nd CAA, what it did, there were certain changes that it introduced. The very first thing, the Article 39A. Article 39A, that is to provide free legal aid to poor. Free legal aid to poor if there is any person who is poor. As per Article 39A, it provide what? It provide a free legal aid to that poor. So it got incorporated by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Next, Article 43A, that is participation of workers in management of industries. See, we have read this participation of workers in management of industries, Article 43. Over here. Yeah. So while we were doing this directive principles based on socialist directives based on socialist principles, we have looked into this Article 43A, which state that state shall take steps to secure the participation of workers in the management of industries. So this article also got added by the 42nd Constitution Amendment Act of 1976. Now, another thing that 42nd Constitution Amendment Act of 1976 added was Article 48A, that is to protect and improve the environment. To protect and improve the environment, it comes under the liberal intellectuals. 48, it states that to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country. It also got included by the 42nd Constitution Amendment Act. So these are the three amendments that took place in the directive principles by the 42nd Constitution Amendment Act. Now, let's move forward to the next amendment, that is the 86th Constitution Amendment Act. So we know that 86th Constitution Amendment Act added one of the most important article, that is right to education. Okay. Under Article 21 Clause A, it added right to education. Apart from that, it made what it is free and compulsory education. Free and compulsory education to all by the age of 6 to 14. Between the age of 6 to 14, there is what? Compulsory education. So Article 68A, what it changed? It changed the subject matter of Article 45 and made elementary education a fundamental right under Article 21A. So as you can see over here, in liberal intellectual principles, we have Article 45. It states what? To provide early childhood care and education for all the children until they complete the age of 6 years. But when this 86th Constitution Amendment Act happened, what it did, the one thing that it did was, it changed the status of this 45th article. It changed the subject matter of this and it made it what? It made education a compulsory subject, a compulsory matter under Article 21A. Article 21 is our right to life. It is a sub-article under this. Okay, so that's how the Constitution Amendment changed the status of this particular article. And we get right to education.
That is from 6 to 14 years of age, everyone got, all the children in our country have access to free and compulsory elementary education. Okay, so this is what the two Constitution Amendment Acts we have. Apart from that, now we will discuss some of the most important judgment regarding the DPSP and the fundamental rights. See, we don't say DPSP and fundamental rights, we say DPSP versus fundamental rights. Okay, DPSP versus fundamental rights. As we know that both aims to attain, one aims to attain fundamental rights, aim to attains the political justice. फंडामेंटल राइट से हमें पॉलिटिकल जस्टिस अचीव होगा, वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम टू अचीव सोशियो एंड इकोनॉमिक जस्टिस. सो देयर वाज द जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स थे रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. सो व्हाट वर दीज? फर्स्ट इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सी दोराईरंजन चंपकम दोराईरंजन इन 1951. द वेरी फर्स्ट जजमेंट. जब पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में कि किसको किसके ऊपर प्रिवेल करना चाहिए, डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए या फिर फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम we have the very first judgment, that is state of Madras versus C. Dorai-Ranjan in the year 1951. So now you have to keep in mind the judgments. Next thing you have to keep in mind is the year in which that particular judgment came and the verdict. Okay, what was the verdict of Supreme Court? Another thing I'll repeat, chronology. Chronologically पहले कौन सा जजमेंट आया था, उसके बाद कौन सा जजमेंट आया था. These are the types of questions जो बहुत रेयर आपसे पूछे जाते हैं. So very first is judgment of Supreme Court, that is in the state of Madras versus C. Dorai-Ranjan case in 1951. So over here I have written it in a very short form so that you can write it in the same short form. So what this state, the Supreme Court said when this dispute happened that what should prevail, Supreme Court said that DPSP cannot prevail over fundamental rights. Okay, fundamental rights के ऊपर आप directive principles को क्या नहीं कर सकते हो, वो prevail नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर उनको importance नहीं दे सकते हो. ठीक है, अगर कोई भी conflict होता है between DPSP and fundamental rights, if there is any conflict between these two, see fundamental rights are the basic rights that are guaranteed to a citizen by the Constitution. But ये जो directive principles हैं, they are what? They are the duty of the state to implement. So what Supreme Court said कि अगर इन दोनों के बीच में DPSP और fundamental right के बीच में कोई conflict होता है, then at that point of time what you will do, at that point of time fundamental rights shall prevail over DPSP. तब क्या होगा, जो fundamental right होगी वो prevail करेगी directive principle of state policy के ऊपर. So this was the very first judgment, very first verdict of Supreme Court. So as I have written over here, in state of Madras versus C. Dorai-Ranjan 1951, in the second point you can see it is written that Supreme Court said, this is the verdict, DPSP cannot prevail over fundamental right. In case of conflict, add over, you can add it, in case of conflict, अगर दोनों के बीच में कभी भी कोई भी conflict आता है, then fundamental right will be given importance over directives. Okay, over these directive principles, what will be given importance? Fundamental rights को हम importance देंगे over DPSP. So this is what Supreme Court said in C. Dorai-Ranjan case 1951, the very first judgment of our DPSP versus fundamental rights. Now नेक्स्ट आता है यही सेम चीज. अब आता है हमारे पास एक केरला एजुकेशन बिल करके एक जजमेंट था जो कि 1957 में था. केरला एजुकेशन बिल में सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन इवॉल्व किया, बिकॉज डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट बहुत ही डिस्प्यूटेड हो गया था. सो व्हाट हैपेंड, केरला एजुकेशन बिल में क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने एक डॉक्ट्राइन दिया और डॉक्ट्राइन था डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. अब इस एजुकेशन बिल में व्हाट हैपेंड, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, as you can see a clear screen, I'm writing over here.
Kerala Education Bill. You can just make the same flow chart. Supreme Court said that DPSP cannot override. DPSP cannot override. But जो कोर्ट है ना, कोर्ट सेड कि जो डीपीएसपी है उसको हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, कैन नॉट इग्नोर द डीपीएसपी कंप्लीटली. वो फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकता है, बट उसको हम कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं. सो आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन दिया, एक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दिया, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर दिया था. अगर पार्लियामेंट चाहे वो अमेंड कर सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किए बिना वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है उसके किसी भी पार्ट को. सिमिलरली देयर वाज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. And what Supreme Court said, as per harmonious construction, the court held that there is no inherent conflict between fundamental rights and DPSP. कोई inherent conflict नहीं है उनके बीच में. But while interpreting a law, should attempt to give effect to both as far as possible. मतलब कि जब आप कोई भी law को whenever you are interpreting any kind of law, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हैं, दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. वो एक हार्मोनियस मैनर में काम करें. अब व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड कि टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, दे शुड बी डन इन सच अ मैनर दैट देयर विल बी हार्मोनाइजेशन. कि दोनों का जो इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे फिर वो फंडामेंटल राइट हो या फिर डीपीएसपी हो, उनका एक हार्मोनियस मैनर में उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें, और उनके बीच में एक सिंक होना चाहिए, हार्मोनाइजेशन होना चाहिए. तो ये बोलता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को फॉर्मुलेट करने का मेन रीजन था फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को साथ में, अगर कोई भी हमारा फंक्शन, कोई भी लॉ हमारा फॉर्म कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसको क्या करना है, जो भी हार्मोनियसली उनको इम्प्लीमेंट करना है. हार्मोनियसली वो कब इम्प्लीमेंट करेंगे? कि जब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगी, ना कि आपस में. इट शुड नॉट बी फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, इट शुड बी फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी. दे शुड वर्क टुगेदर. तो इसीलिए हमने इसको डॉक्ट्राइन को नाम दिया डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. सो Kerala Education Bill in 1957, there got evolved the doctrine of harmonious construction, and as per the doctrine, the court held that there is no inherent conflict between fundamental rights and DPSP. The courts, while interpreting a law, should attempt to give effect to both as far as possible. जितना मैक्सिमम मैनर में वो दोनों एक दूसरे के साथ हार्मोनाइजिंग फॉर्म में रह सकते हैं, उतना मैक्स टू मैक्स हमें उनको हार्मोनाइज करके चलना. दिस इज व्हाट डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट. कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, दे शुड वर्क इन अ कॉम्प्लीमेंट्री मैनर टू ईच अदर. दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. एंड why is it important? क्यों important था ये इस तरह का डॉक्ट्राइन हमें इवॉल्व करना? बिकॉज अगर हम हर टाइम पे डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट की डिबेट में रहेंगे, सो वी नो दैट डीपीएसपी अचीव सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट अचीव सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, वेयर एज जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारी अचीव करती है पॉलिटिकल जस्टिस, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट अगर देखो, जब हमारे पास अभी डिबेट होगा फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, द डिबेट विल बी बिटवीन पॉलिटिकल जस्टिस वर्सेस सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस. अगर हम इनको हार्मोनियस फॉर्म में लेके चलेंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे, बोथ शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, देन वी कैन अचीव बोथ political justice and socio-economic justice. So that's why it said that implementation in such a form that they should what? They should complement each other. They should complement each other. And they should work in a harmonizing form, so that we can achieve political justice also and socio-economic justice also. This is what it states. Now what happened after this? There will come Golaknath case. Okay, Golaknath case mein what happened after this? Just give me a minute, let me erase it all. Yeah. So now
Golaknath case in 1967, it says that fundamental rights cannot be abridged or diluted. हमने जो अपनी fundamental rights में पढ़ा था, we have read about Golaknath case, basic structure के time पे we have read Golaknath and Keshwananda Bharti. तो उसमें हमारा बोला गया था कि जो fundamental rights है, they cannot be abridged, you cannot take them away or you cannot dilute them. But Parliament responded with the 25th Constitution Amendment Act. पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्ड किया 25th सीए में और पार्लियामेंट ने क्या ऐड कर दिया, पार्लियामेंट ने ऐड किया आर्टिकल 31C हमारे पार्ट 3 में। अब ये जो आर्टिकल 31C है ना, इसके दो प्रोविजंस थे इसके अंदर, दो सब क्लॉजेस थे जिसमें लिखा गया था कि इफ अ लॉ इज मेड टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C, कि अगर एक लॉ बनाया जा रहा है किसको इफेक्ट करने के लिए, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में जो डीपीएसपी मेंशन्ड है उनके अंदर। अब 39B में क्या मेंशन्ड है, 39B टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नाउ व्हाट डज दिस मीन, ये स्टेट करता है कि जो ओनरशिप है और जो कंट्रोल है जो मटेरियल रिसोर्सेस का है वो क्या होना चाहिए, वो एक कॉमन गुड को अचीव करने के लिए हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अचीव अ कॉमन गुड। एक कॉमन गुड को अचीव करने के लिए हमें जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है कम्युनिटी के वो यूज करने। दिस इज व्हाट गिवन इन 39B। नाउ 39C स्टेट्स, 39C अगेंस्ट है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के। 39C states concentration of wealth. अब there should not be concentration of wealth in the hands of few. Okay, अगर कुछ ही लोगों के हाथ में wealth concentration होगा, so it will be against the larger interest of the society. So what this law stated 31(1)(c) में क्या दिया गया, जो first provision था उसमें बोला गया कि if a law is made to give effect to 39B and 39C and in the process the law violates article 14, article 19 or article 31, then law should not be declared as unconstitutional or void merely on this ground. अब इसने बोला what this it means, state कि अगर 39B and 39C, that is distributive justice, and next one is for the larger interest of the society, concentration of wealth नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया जो 39B और 39C को इफेक्ट में ला रहा है, ठीक है, तो जो हमारी डीपीएसपी 39B और 39C के अंडर है उनको इफेक्ट में ला रहा है, तो जो लॉ है हमारा, इवन इफ इट वायलेट्स 14, 19 या 31, चाहे फिर वो आर्टिकल 14, 19 या 31 को वायलेट कर रहा है, दिस लॉ शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल because it is giving effect to 39B and C. One is talking about distributive justice and the other one is talking in the largest interest of the society, concentration of wealth के against है. So if it violates 14, 19 and 31, then उसको हमें unconstitutional declare नहीं करना है. Next 31 के जो B second provision था उसमें क्या बोला गया, next it state any such law which contains the declaration that it is to give effect to DPSP in 39B and C shall not be questioned in the court of law. अब यही सेम चीज उन्होंने नेक्स्ट उसमें बोली, उस what parliament did, उसमें सेकंड प्रोविजन में क्या ऐड किया, they said कि जो 39B या फिर 39C, if there is any law जो इफेक्ट में, जो कि डीपीएसपी के 39B और C को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया है, it shall not be questioned in any court of law. But judiciary के पास एक power है, that is judicial review. आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि वो ठीक है या गलत है। These are the two provisions जो हमारे गोलकनाथ केस 1967 के बाद जो 25th CA आया था उसमें दिए गए थे। तो 31C में दो चीजें ऐड हुई कि 39B और 39C में जो डीपीएसपी है, अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो उन दोनों प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है और वो वायलेट करता है हमारा आर्टिकल 14, 19 या फिर 31, then the law should not be declared as unconstitutional. उसे आप unconstitutional declare नहीं कर सकते। Next comes B provision. It states that any such law, कोई भी लॉ जो क्या कर रहा है, जिसमें डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि वो इफेक्ट में लाएगा 39B या C को, उसको आप किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। इट इज अगेन द जुडिशियल रिव्यू।
Now what happened after this? Come the लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशवानंदा भारती. अब केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट बट कुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट कोई भी पार्ट को अमेंड करे बिना बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किए. दिस इज द वन थिंग इट सेड. नेक्स्ट थिंग इट सेड, द सेकंड क्लॉज ऑफ आर्टिकल 31C. सेकंड क्लॉज क्या था? ये हमारा second clause tha, any such law which contains the declaration that it is to give effect to Dpsp in article 39B and C shall not be questioned in the court of law. Now यही बोला कि जो 31C था ना, कि उसे आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड है क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. As this 31C is violating the basic structure, it is violating the basic structure, so it is what? It is unconstitutional and void. ठीक है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. Now however, Supreme Court upheld the first provision of the Article 31C. Supreme Court ने वो जो first provision था जिसमें दिया गया था if it will violate 14, 19 और 31, Supreme Court ने उसे upheld किया. The court also held that the power of judicial review cannot be taken out by the Parliament. अभी सेकेंड जो हमारा प्रोविजन था 31C का, उसमें बोला गया था कि आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या डिक्लेयर किया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अब व्हेन द कोर्ट सेड दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाई इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? बिकॉज पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सुप्रीम कोर्ट से वो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो नहीं छीन सकता है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ व्हाट? जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. एंड केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट सेड कि you can amend any part of the constitution but you cannot destroy the basic structure of the constitution. And as judicial review is the part of basic structure, so by that we declare that 31C is unconstitutional. Yeah, 31 में जो clause है that is unconstitutional. The second provision is unconstitutional. Now Parliament brought the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976. उसके बाद में लेके आया वो 42nd Constitutional Amendment Act 1976. अब इसने क्या किया है जो 42nd Constitutional Amendment Act था? It extended the scope of the first provision of 31C. ये जो first provision था हमारे 31C का, this very first provision, उसका scope बढ़ा दिया. कैसे? इसमें पार्लियामेंट ने एक चीज इंक्लूड की. इट सेड दैट, कैसे उसने स्कोप बढ़ा दिया? बाय इंक्लूडिंग विद इन इट्स परव्यू एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट एनी पार्ट ऑफ डीपीएसपी स्पेसिफाइड in part 4 of the constitution and not merely 39B or C. अभी देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 39B and C. 39B and C को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है that is distributive justice and concentration of wealth के अगेंस्ट, कोई भी लॉ फॉर्मुलेट हो रहा है and if it violates 14, 19 और 31 then वो unconstitutional डिक्लेयर नहीं होगा. But in this 42nd Amendment Act what Parliament did, पहले इट वाज जस्ट 39B and C, पहले तो खाली 39B और C था डीपीएसपी का. बट व्हाट पार्लियामेंट डिड, पार्लियामेंट सेड दैट कि अगर कोई भी लॉ फॉर्मुलेट किया जा रहा है, उसने स्कोप बढ़ा दिया है 31C का बाय सेइंग दैट एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट एनी डीपीएसपी, कोई भी डीपीएसपी को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ जो बनाया जा रहा है जो कि पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में जितनी भी डीपीएसपी है अगर उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ फॉर्मुलेट किया जा रहा है देन दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, एंड नॉट मियरली 39B and C. सिर्फ 39B and C ही नहीं, उसके अलावा डीपीएसपी में कोई भी लॉ जो डीपीएसपी के अंडर फॉर्मुलेट किया जा रहा है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी लॉ फॉर्मुलेट किया जा रहा है वो क्या होगा, इट इज नॉट
it is constitutional, it is not unconstitutional. This is what parliament said. Now what happened? जब फिर उसके बाद हमारे पास पता है केशवानंद भारती के बाद मिनर्वा मिल केस आया था. अब मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ? इन पार्लियामेंट सेड कि पूरी डीपीएसपी के लिए जो 31 जो क्लॉज सी है, अगर कोई भी डीपीएसपी है आर्टिकल 14, 19 और 31 अगर उसको वायलेट कर रहा है बट स्टिल इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज व्हाट इट सेड. सो नाउ मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ? what the court said, it said that law under article 31c would be protected only if it is made to implement 39b and c and not to other DPSPs. इस सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर जो 31c के अंदर हमारा जो भी लॉ बनाया गया है ना, it would be protected only if it is made, वो तभी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम डिक्लेयर नहीं करेंगे अगर वो सिर्फ 39b और 39C को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके अलावा कोई भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है. दिस इज व्हाट दे सेड. एंड द एक्सटेंशन टू ऑल डीपीएसपी वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल केस. एंड द अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या डिक्लेयर किया उन्होंने? जो एक्सटेंशन पार्लियामेंट ने किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, जहां पे उन्होंने बोला था कि कोई भी लॉ जो हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने पार्ट 4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल है अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर? 31C के अंदर. पहले क्या था? सिर्फ 39BC था. उसके बाद केशवानंद भारती के बाद उन्होंने क्या किया? 42nd में बोला कि पूरा पार्ट 4 को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है. बट सुप्रीम कोर्ट सेड, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1980 मिनर्वा मिल जजमेंट, कि जो 31C है ना वो सिर्फ 39B और 39C को प्रोटेक्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला जो हमारा आर्टिकल है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो आपने ये एक्सटेंशन बढ़ाया है ना पूरे पार्ट 4 के अंदर, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन मिनर्वा मिल केस वर्सेस मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980. तो ये हमारे 4 मेजर जजमेंट्स हैं यहाँ पे. पहला हमने पढ़ा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सी दुराई रंजन 1951, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रिवेल नहीं कर सकता है अगर कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है डायरेक्टिव्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम फंडामेंटल राइट विल बी प्रिवेल्ड ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट कम्स केरला एजुकेशन बिल ऑफ 1957. केरला एजुकेशन बिल में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन दिया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का. ये दोनों फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इस फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि वो हार्मोनियसली फंक्शन करे, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं रहे. नेक्स्ट गोलकनाथ केस ऑफ 1967, उसमें जब पार्लियामेंट ने 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया और उसने बोला 31 क्लॉज सी इंसर्ट किया और उसमें 2 प्रोविजंस थे. पहला प्रोविजन क्या था कि 39B और 39C को, 39B और 39C को अगर कोई भी लॉ हम ऐसा लाते हैं जो इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा है और वो वायलेट करता है 14, 19 या फिर 31 को, दैट लॉ शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. एंड बी प्रोविजन स्टेट्स कि जो भी हम लॉ ला रहे हैं वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. जो 39B और C को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी लॉ हम पास करेंगे या फिर जो भी डिक्लेरेशन होगा जो उसको इफेक्ट में लाएगा वो किसी भी कोर्ट में क्या नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. नाउ देन केशवानंद भारती केस में पार्लियामेंट का जो जजमेंट था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अमेंड करो किसी भी पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को बट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर. आप जो 31 क्लॉज सी था, 31C था, उसका जो फर्स्ट प्रोविजन था, फर्स्ट क्लॉज था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हाँ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज वैलिड, इट इज एक्सेप्टेबल. बट जो सेकंड है विच स्टेट्स दैट कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, मतलब आप किसी भी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, देन व्हाट हैपेंड, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज judicial review is part of what? Judicial review is part of the basic structure of our constitution. और गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बोला कि आप पूरा अमेंडमेंट करो बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय मत करो. और जुडिशियल रिव्यू को तो ये 31 आर्टिकल 31C का सेकंड क्लॉज में स्ट्रेट अवे बोला गया कि आप जुडिशियल रिव्यू ही नहीं कर सकते हो. दैट्स व्हाई उसको
कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। नाउ उसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट ने भी एक और अमेंडमेंट ले आए, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेके आए और उन्होंने एक्सटेंड कर दिया जो स्कोप था 31 के फर्स्ट क्लॉज का, 31C में जो फर्स्ट क्लॉज था उसका स्कोप ही एक्सटेंड कर दिया। पहले उसमें खाली 39B और 39C इंक्लूडेड था, नाउ 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ उन्होंने पूरा पार्ट 4 इंक्लूड कर दिया कि पूरे पार्ट 4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ बनाया जा रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। देन मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो 31C है ना, इससे आप प्रोटेक्ट करोगे, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप सिर्फ 39B और 39C के लिए इसको यूज कर सकते हो। It will be protected only if it is made to implement which directive, 39B and 39C. उसके अलावा कोई और DPSP को इम्प्लीमेंट करोगे तो उसको हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, then it will be declared unconstitutional. एंड द एक्सटेंशन जो आपने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दिया है कि पूरा पार्ट 4 ही, आपने क्या बोला, पूरे पार्ट 4 को हम इम्प्लीमेंट करेंगे 31C के अंडर, ठीक है, बट इट विल बी व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो पूरा एक्सटेंशन था दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, this is unconstitutional and void. This is what Supreme Court said in Minerva Mill judgment. So you have to keep in mind all these things. After the lecture, you can pause it down and write down some of the important points which you find. So these are the judgments which we have regarding fundamental rights and directive principles. This is all for our directive principles of state policy. We have discussed all the directive principles, the implementation, and the kinds of directive principles, socialist, Gandhian, liberal, intellectual. Now, next thing we have to do is some of the questions regarding this. Pehla question hai, these are some of the practice questions and some of the previous year questions. So the very first question is, what are the ideals that state must keep in mind while framing policies? जब भी स्टेट कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है तो उसको कौन से आइडियल्स, कौन से प्रिंसिपल्स याद रखने चाहिए? वेरी फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, सेकंड इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, थर्ड इज गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड फोर्थ इज सोशलिज्म. तो आंसर इज वेरी क्लियर. कौन से प्रिंसिपल्स याद रखने चाहिए? प्रिंसिपल्स याद रखने चाहिए, इट इज सेकंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. द एक्ट इज व्हाट? गाइडलाइंस. So these are the principles that state must keep in mind. Next, which of the following article consists equal pay for equal work for men and women? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो क्या कंसिस्ट करता है that there should be equal pay for men and women? The very first is Article 31, Article 39A, Article 41 and Article 39. This is the question you will let me know in the comment section. हमने इसके रिगार्डिंग एक एक्ट भी डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट. We have discussed equal remuneration act. So I have told you there the article. So you will tell me which article consists equal pay for both men and women. Now next, which of the article in the constitution state the Gandhian principles? कौन सा आर्टिकल है जो गांधीयन प्रिंसिपल्स को स्टेट कर रहा है? अब देखो आर्टिकल यहाँ पे दिया है हमें 40 to 48, 41 to 48, आर्टिकल 42 एंड आर्टिकल 40. सो इसमें से आपको बताना है. The answer is आर्टिकल 40, 48. Let's go back to Gandhian principles. यहाँ पे हमारे पास क्या है? We have 40 and we have 48. 40 क्या बोलता है? Village panchayats and 48 states slaughter of cow, calves and other milch animals. So I have told you कि you have to keep in mind the article. यहाँ पे देखो स्टेट अवे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो गांधीयन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जो गांधीयन प्रिंसिपल स्टेट करता है. सो आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल 40 एंड 48. This is the answer. 40 is for panchayats. 48 is for slaughter of animals. So that is why I have told you, you have to keep in mind the articles. The question can also be like,
आर्टिकल 40 क्या स्टेट करता है या फिर आर्टिकल 48 क्या स्टेट करता है. अनदर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कैन बी लाइक कि आर्टिकल 40 है वो हम कौन से प्रिंसिपल्स के अंडर उसको इंक्लूड करते हैं, देन इट विल बी गांधीयन. ओके, सिमिलरली आर्टिकल 51 है उसको हम कौन से प्रिंसिपल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, लिबरल. इस तरह के क्वेश्चंस भी यू कैन गेट इन योर एग्जामिनेशन. नाउ नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आर्टिकल स्टेट करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री. यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल स्टेट करता है, इट इज आर्टिकल 44. हमने पढ़ा था यहाँ पे when we have discussed the liberal intellectual principle, the very first article states article 44, that is liberal intellectual. It states that article 44 में क्या बोल रहा है liberal intellectual principles में, the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. आर्टिकल 44 states कि स्टेट को क्या एंडेवर करना चाहिए कि अपने सारे सिटीजन्स को क्या सिक्योर करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. So here you got what? You get uniform civil code. Uniform civil code is one of the like most asked questions of this. ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा. Either they will ask the article, either they will ask article 44 is related to what? Related है किससे? ठीक है, कौन से principles के अंडर आता है? So this is what you have to keep in mind. Now next is, you can put a star over here, and you can write IMP important for this. Now next, which of the new DPSP was added to the Constitution through the 42nd Amendment Act? अभी हमने 42nd Amendment Act डिस्कस किया, और 42nd Amendment Act में कौन सा DPSP है जो ऐड किया था हमने 42nd Constitution Amendment Act के थ्रू. यहाँ पे हमने अपने अमेंडमेंट्स डिस्कस किए हैं. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने 3 प्रिंसिपल्स अपने डीपीएसपी में ऐड किए थे. द फर्स्ट इज आर्टिकल 39A which states to provide free legal aid to poor. Those who are poor they can get free legal aid. 39 के बाद हमने आर्टिकल 43A डिस्कस किया था which states participation of worker in management of industries. Next it states 48A to protect and improve the environment. हमने ये 3 डिस्कस किए थे. So let's move back to our question. Question states कि इनमें से कौन सी DPSP हमारे 42nd amendment के थ्रू ऐड की गई. First is to promote equal justice and provide free legal aid to poor. Second, promote international peace and security between nations. Third is state need to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. And fourth is prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs. So हमने वहां पे पढ़ा था, हमारा जो फर्स्ट है it is article 39A, that is to provide free legal aid to poor. This is what we added by the 42nd Constitution Amendment Act. Now next, इनमें से कौन सा which of the following statement is correct regarding directive principles? इनमें से कौन सा statement directive principles के regarding correct है? So very first is positive injunctions. Okay, very first एक की positive injunctions है. B is negative injunctions. C is justifiable and D is none of the above. So we have read that DPSP acts as positive obligation on the state. And Fundamental Right Act is negative obligation of the state. तो आंसर में हमारा है positive injunctions, which mean the same. So the answer is A option. This one is the correct answer. Now, next is the enforcement of DPSP depends most on जो DPSP का enforcement है, ठीक है, कि कौन DPSP को अच्छे से implement करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनफोर्समेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी किसके ऊपर डिपेंड करता है सबसे ज्यादा? ए कोर्ट्स, बी इफेक्टिव ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट, सी रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एंड डी पब्लिक कॉर्पोरेशन. सो द आंसर इज सी, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, because our DPSP is a positive obligation on the state, so it depends on the resources that are available. Depends on the resources that are available
so that if there are particular resources, if there are so much of resources, then government can implement all, otherwise government can implement some. That is why we say that DPSP, for DPSP we cannot move to court. Okay, now next, Article 35 to 51 of our constitution are related to which of the following? अभी हमने डिस्कस किया, अभी तक पिछले 2 दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं. 35 to 51 relates to DPSP, which is part 4 of our Indian Constitution. Next, which among the following part of the Constitution includes the concept of welfare state? कौन से पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पे हमारा कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट का इंक्लूड होगा? वेलफेयर स्टेट हमने कहाँ पे पढ़ा है? वेलफेयर स्टेट हमने पढ़ा है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में. फंडामेंटल राइट्स में हमें वेलफेयर स्टेट नहीं पढ़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं पढ़ा, प्रियम्बल में नहीं पढ़ा. हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारा कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट, where state formulate the laws for welfare of the people. कैसे कैसे लॉज, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का है कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने पढ़ा. अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्री लीगल एड टू पुअर, there should be equal pay for men and women, participation of workers, establishment of cottage industries, establishment of cooperative societies, protection of wildlife and forest. ये सब हमने कहाँ पढ़ा? All these are the components of welfare state. ये सब हमने कहाँ पे पढ़ा? DPSP के अंदर. तो किस पार्ट में दिया है concept of welfare state? Directive principles of state policy. DPSP promotes. You can also get question, which of the following part of the Indian Constitution promotes welfare state? So DPSP also promotes the welfare state concept. Now, next. Which amendment made elementary education for all children a fundamental right? कौन से अमेंडमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया? वी नो दैट राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? 86 एंड एडेड आर्टिकल 21A. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 है 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A. सो द आंसर विल बी 4th ऑप्शन. नाउ next, from which of the country Indian Constitution has borrowed directive principles of state policy? हमने कहाँ से borrow किया है? Option 1 is USA, second is Ireland, third is France, fourth is Japan. So the answer is Ireland. Answer क्या है हमारा? Ireland. You can also get, जैसे यहाँ पे DPSP के लिए है वो बोल देगा फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया है, ड्यूटीज कहाँ से लिया है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिया है, रिट्स कहाँ से लिया है, प्रोरोगेटिव रिट्स कहाँ से इंक्लूड किया है. You can also get questions with respect to all this as well. So you have to keep in mind. हमने अपने फर्स्ट लेक्चर, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये सब चीजें डिस्कस की थी कि हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं. You can go there and you can write these down. So right. So we get DPSP from Irish constitution, that is from Ireland. Next. Okay, we have not discussed citizenship questions, so here are 3-4 citizenship questions as well. So very first states, citizenship provisions are enshrined in the constitution in. कहाँ पे enshrined है citizenship के provisions? That is, first is part 2, second is part 2 article 5 to 11, third is part 2 article 5 to 6, and fourth is part 1 article 5 to 11. So now the answer is, you will tell me in the comment section, or you will tell me कौन सा act है citizenship का which have all the provisions with regard to citizenship. Okay, for this I am telling the answer. The answer is part 2 article 5 to 11. Article 5 to 11 के अंदर है हमारा citizenship. Part 1 article 1 to 4 contains what? Contains the name and all the states, name of the states and the union territory. Next question states, details on how citizenship may be acquired and terminated are enumerated in. कहाँ पे mentioned है details की citizenship आप कैसे acquire कर सकते हो और कैसे terminate कर सकते हो? The very first is part 2 of the constitution, B is Citizenship Act of 1955, C is Schedule 1 of the constitution, and D is various enactments of the parliament. So यहाँ पे देखो, पहला है part 2 of the constitution, second है Citizenship Act of 1955. जितनी भी details है वो हमारे Citizenship Act के अंदर given. So the answer is B.
Next comes, a person can become a citizen of India even if born outside India if his or oblique her. एक पर्सन है वो इंडियन सिटीजन कब बन सकता है? अगर वो इंडिया के बाहर भी बॉर्न हुआ है. पहला ऑप्शन है फादर इज एन इंडियन सिटीजन, बी ऑप्शन इज मदर इज सिटीजन ऑफ इंडिया, C is father is citizen of India at the time of the person's birth, and D is father or mother is a citizen of India at the time of the person's birth. तो हमने जब birth पढ़ा था, citizenship acquiring through birth, we have read that either both the parents should be Indian, or one of the parent can be Indian, and the other must not be an illegal migrant. तो हमारा इसमें आंसर क्या है? The answer will be D option. Either father or mother should be citizen of India at the time of person's birth, and the other parent must not be an illegal migrant. Now, last है हमारे पास, which of the following statement is or are not indicative of the difference between fundamental rights and DPSP? किसमें इंडिकेशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स और DPSP के? डिफरेंस किसमें इंडिकेट नहीं किया गया? The very first is DPSP aimed at promoting social welfare, while fundamental rights are for protecting individuals from the state encroachment. This is true. DPSP social welfare के लिए और fundamental rights जो है वो individual को state से protection देता है. Second, fundamental rights are limitations on state actions, while DPSP are positive instructions for the government to work. Fundamental rights क्या है? वो limitations है state के actions पे, they act as negative obligation. पर DPSP क्या है? They are positive instructions कि government को कैसे function करना है. Third is fundamental rights were included in the original constitution, but DPSP were added by the first amendment. First amendment में हमने discuss किया था, DPSP कहीं पे भी इसमें add नहीं हुआ था, उसमें schedule 9 add हुआ था हमारा, article 31 add हुआ था. Next thing it states what? उसके अंदर reservation का कौन से 15 clause 4 add हुआ था. These are the things that got incorporated. DPSP उसके अंदर कहीं भी नहीं था. तो हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत है. तो यहाँ पे पूछा है कौन सा ऑप्शन हमें डिफरेंस नहीं बता रहा है. It is wrong. It is not telling us any kind of difference. Now next is fundamental rights are amendable, but DPSP cannot be amended. No, it is also not true. We know that केशवानंद भारती के बाद जब हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन but without destroying the basic structure. So the fourth one is also incorrect. So for this question we have two answers, and the answer is option number 3rd and option number 4th. Option number 3rd and option number 4th. We have two answers. So this is the correct answer. These are the correct answers. So this is all for our today's class. We have completed our directive principles of state policy, and tomorrow we will be starting with fundamental duties. Fundamental duties cover Article 51A and Part 4A of our Indian Constitution. कल हम अपनी fundamental duties से start करेंगे. That's all for today's lecture. I'll see you guys tomorrow at 10 PM. Have a good day ahead. Keep revising and keep practicing.